A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of chapter number 13, that is depreciation. You know very well, in this chapter, firstly, we discussed a lots of theoretical topic like what is depreciation, what are the characteristics of depreciation, what are the related terms related to the depreciation, causes of depreciation, and factor determining the amount of depreciation, and the concept of book value or written down value, as well as we discussed the accounting treatment of depreciation. In the last video, we discussed the method of depreciation. You know very well, there are basically two methods of depreciation which are there in your CBSE syllabus. That is, the first one is a straight line method, and number two is a written down value method. In the last few videos, we discussed the first method of depreciation, that is the straight line method. In this method, we study the feature of straight line method. Under the straight line method, the amount of depreciation is constant from year to year, as well as in this method we charge the depreciation at a fixed percentage on the original cost. Whereas as per the straight line method or the original cost method, the value of the assets is will reduce to the original cost of the assets to zero. मतलब किसी भी हम assets को अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिशिएट करते हैं तो उसकी एसेट्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी. बट when we are talking about the straight line method, when we charge the depreciation by the straight line method or original cost method, so by the help of this method we find that the amount of the assets will reduce to the zero after its useful life. एंड इससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल भी प्रेजेंट किया था. In the last video, we also discussed the two important formulas related to the amount of depreciation. The first formula of depreciation is related to the three factors of depreciation, that is original cost minus scrap value divided by useful life of an assets. And the second formula is totally based on the rate of depreciation. If any question there is a rate of depreciation is given, so in this situation we find out the amount of depreciation by the formula, that is depreciation equals to original cost into rate upon 100. Rate means the rate of depreciation. In the last video we discussed the three important numerical problem. The first numerical problem which are related to the calculation of amount of depreciation, यानी उस फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने सीखा कि कैसे हम डेप्रीशिएशन की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं. And second, with the help of second method, second question, numerical question of straight line method, we find out how we will prepare the machinery account and depreciation account. यानी कि हम दूसरे न्यूमेरिकल से ये सीखने को मिला कि हम किस तरह से डेप्रीशिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं और मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं. As well as with the help of third numerical, we also discussed the concept related to the sale of machinery. You know very well, after some time when any businessman sold their fixed assets, so how it will be recorded in our machinery account, ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीखने की कोशिश की. जनरली इट इज़ अ लास्ट वीडियो, आपको लास्ट वीडियो याद होगा. उस वीडियो में हम लोगों ने जनरली यही बात की थी, यही डिस्कशन किया था कि हाउ वी विल रिकॉर्ड द सेल ऑफ द एसेट्स इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट. When we sold any assets, so firstly we charge the depreciation from the beginning of the year till the date of the sale. Thereafter we record the amount of sale, and at the last we find the profit or loss on the sale of the assets. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं सेल ऑफ द एसेट्स पे. जब हम किसी एसेट को सेल करते हैं तो या तो हमें प्रॉफिट होता है या तो हमें लॉस होता है. So without creating any kind of delay, now we will move to the next method of depreciation. You know very well, आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही मेथड हैं. The first method is straight line method, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, हर एस्पेक्ट पे डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया है कि how we will calculate the amount of depreciation. Secondly, we discuss how we will prepare the machinery account and depreciation account. Machinery account means the assets account. And number third, how we will record the sale of the machinery with the help of third numerical. If any machinery are sold after the purchasing of the assets,
So how it will be recorded in our books of account, and how we will calculate the amount of profit or loss on such sale of the assets. So now we will move to the next topic of this chapter, that is a second and last method of depreciation, that is a written down value method. So firstly, we introduce this topic, what is written down value method, and thereafter we discuss written down value method, how written down value method is different from the straight line method. So let's start the today's topic. Let's go. The second and the last method of depreciation which were introduced by me, that is a written down value method or diminishing balance method. So the second method is written down value or diminishing balance method. This method is also known as the reducing balance method. So first of all, we remove all types of doubts from your side. So first name is written down value method. Basically इस method को हम लोग written down value method के नाम से जानते हैं. Okay. But some of the other question you can see that इसको हम और methods नाम से भी pronounce कर सकते हैं, that is diminishing balance method and number third reducing balance method. So अगर एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में कोई और नाम से भी मेथड दिया होगा तो यू कैन ईजिली डिफरेंशिएट कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड को और कितने नामों से जाना जा सकता है. सो द फेमस नेम ऑफ द रिटन डाउन वैल्यू मेथड इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, दैट इज डीबीएम, एंड आरबीएम. आरबीएम मीन्स द reducing balance method, as well as WDV method. So you can see that the second method of depreciation we can also known as the WD method, DB method and RB method. और आपको याद होगा the first method of the depreciation, as you know that the original cost method is also known as the original cost method, that is a fixed installment method, equal depreciation method. उसी तरह से उसके भी कई सारे नाम हैं. That's like the second method of depreciation will be known as the DB method, that is diminishing balance method and reducing balance method. So what is written down value method? Let's we discuss it. Under this method, a fixed rate of or percentage of depreciation is charged every year on diminishing value of the assets. That is a cost less depreciation. यानी इस मेथड पे जो भी हम डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं वो हर साल जो चार्ज होता है वो डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट्स. मैं और क्लियर कर देता हूँ. द डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट्स मीन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स. यानी इन दिस मेथड डेप्रीशिएशन विल बी चार्ज एवरी ईयर ऑन द बैलेंस वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स. एंड व्हाट इज द बुक वैल्यू? दैट इज कॉस्ट लेस डेप्रीशिएशन टिल द अमाउंट इज रिड्यूस टू बी स्क्रैप वैल्यू. और कब तक इसको डेप्रीशिएट किया जाता है? जब तक कि इसकी स्क्रैप वैल्यू तक ये वैल्यू पहुंच ना जाए. Thus the amount of depreciation is reduced gradually because it is charged on diminishing value of the assets. Under this method, amount of depreciation is transferred to profit and loss account. So ये तो पहले से ही आपको पता है कि profit and loss account में ट्रांसफर करते हैं every year. The assets is shown in balance sheet at its diminished value. और जब भी हम बैलेंस शीट में एसेट्स को शो कराते हैं तो किस बेसिस पे शो कराते हैं? हम शो कराते हैं उसके बुक वैल्यू पे. वो हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट में भी करते थे. द स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट्स इज नेवर जीरो एंड देयर इज सम रियलाइजेबल वैल्यू. ये भी याद रखिएगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है जब तक हम इस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. हाउ कैन यू सी दैट? सो लेट्स वी टेक द वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ written down value method and original cost method. Suppose आपने 1 जनवरी 2011 को आपने एक मशीनरी परचेस की फॉर रुपीज 1 लाख रुपीज. ओके, सपोज यू परचेज अ मशीनरी ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज ऑन 1 जनवरी 2011 and you charge a depreciation. Firstly, you charge the depreciation on by original cost method, and thereafter you charge the depreciation by written down value method. So आप दोनों मेथड से depreciation चार्ज करें, and the rate of depreciation is at the rate of 10% per annum.
और आपने 1 जनवरी 2011 को बुक ओपन की है, सो दैट योर क्लोजिंग ईयर इज 31 दिसंबर। सपोज आप कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहे हो, यू नो वेरी वेल देयर आर बेसिकली 2 ईयर, कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को एंड कैलेंडर ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को। सो द जब आपने परचेस किया यानी 1 जनवरी 2011 को, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज फॉर द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मैं दोनों को कंपेयर भी कर रहा हूं साथ साथ। एंड यू कैन सी दैट फर्स्ट ईयर जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो कितना लगेगा? 10% के हिसाब से। फॉर द फर्स्ट ईयर 1 लाख का 10% कितना हुआ? दैट इज 10,000। एंड यहाँ पे भी 1 लाख का 10% कितना हुआ? दैट इज 10,000। सो यू कैन सी दैट द फर्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन इज सेम एज वेल एज द बैलेंस वैल्यू, दैट इज द रिटन डाउन वैल्यू कह लो या बुक वैल्यू कह लो। ये बुक वैल्यू कब की है? द बुक वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2011 की बुक वैल्यू। एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो द ओपनिंग वैल्यू ऑफ द 1 जनवरी 2012। सो नाउ आप नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। You know very well, according to the original cost method, depreciation is charged on the original cost. ये बात आपको याद रखनी है कि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे। ठीक है, मैं रेट ऑफ डेप्रीशिएशन थोड़ा बढ़ा देता हूं। सपोज द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज 20%। ओके, तो यहां पर फर्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन कितना चार्ज होता? 20,000। यहां पे भी कितना चार्ज होता? 20,000। वहां पे भी देख लो 80,000। यहां पे भी कितना बचा? 80,000। यानी फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन और फर्स्ट ईयर की बुक वैल्यू दोनों में सेम आ रही है। सर चेंजेस कहां पे? चेंजेस अब आएगा आपको देखने को। इन द सेकेंड ईयर व्हेन यू चार्ज द डेप्रीशिएशन, सो यू कैन फाइंड दैट कि सेकेंड ईयर में डेप्रीशिएशन कितना चार्ज होगा? एज पर द ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख का 20%। क्योंकि यू नो वेरी वेल ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रीशिएशन हमेशा किस पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। एंड व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट? दैट इज 1 लाख। एज पर द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड डेप्रीशिएशन किस पे चार्ज करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, 1 लाख का 20% कितना आया? 20,000। सो अब उसकी बुक वैल्यू क्या हो गई? 60,000। ये बुक वैल्यू कब है? बुक वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2012। ओके, और यही ओपनिंग वैल्यू हो जाएगी कब की? ऑन 31 दिसंबर 1 जनवरी 2013 की। बट जब यहां डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे अकॉर्डिंग टू द रिटन डाउन वैल्यू, तो यू कैन सी दैट द इंफॉर्मेशन गिवन योर स्क्रीन, according to written down value method, a fixed rate or percentage of depreciation is charged every year on the diminishing value of the asset, that is cost less depreciation। तो कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख रुपए थी, उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस कितना कर दिया? 20,000। तो बचा कितना? 80,000। तो आप 80,000 का 20% डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे। यू कैन फाइंड दैट इन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड डेप्रीशिएशन इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू, दैट इज अ कॉस्टलेस डेप्रीशिएशन। तो ये कितना आ जाएगा? 16,000। यस सर, अब डिफरेंस देखने को मिल रहा है, दैट इज 64,000। ओके, सो यू कैन सी दैट द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब हम इसको और थोड़ा क्लियर कर देते हैं आपके लिए। ओके, अब नेक्स्ट ईयर फिर आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे, तो 60,000 1 लाख का 20% अगेन, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हमेशा डेप्रीशिएशन किस पे चार्ज होता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40,000। अब यहाँ पे फिर डेप्रीशिएशन चार्ज होगा तो किसका चार्ज होगा? 64,000 का 20% चार्ज होगा। ओके, सो यू कैन सी दैट 64,000 का 20% कितना होगा? that is 12,800। ओके, so 64,000 रुपीज का 20% आएगा, that is you can see that on your screen, that is 12,800। फिर आप क्या करोगे? 64,000 में से 12,400 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। so you can find that 64,000 less 12,800 equals to 51,200। the book value as on 31st December 2013, एंड यही ओपनिंग रहेगा 1 जनवरी 2014 का। मैं एट द एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहा हूं।
सो यू नो वेरी वेल कि आप देख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड वी चार्ज द डेप्रीशिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। हर साल 1 लाख का ही 20% निकल रहा है, बट इन द रिटेन डाउन वैल्यू मेथड यू विल चार्ज द डेप्रीशिएशन ऑन द बैलेंस। फर्स्ट ईयर का बैलेंस क्या था? 1 लाख रुपए, उसका 20% लगा। सेकेंड ईयर में बैलेंस क्या था? 80,000, उसका 20% लगा। थर्ड ईयर में बैलेंस क्या था? 64,000, उसका आपने 20% चार्ज किया, दैट इज 12,800 एंड यू विल फाइंड 51,200। अगेन फिर हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं, तो यहां पे डेप्रीशिएशन किस पे चार्ज करता है? हमेशा 1 लाख पे ही डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। 20,000, नाउ उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 20,000। बुक वैल्यू कब? 31 दिसंबर 14 एंड यहाँ पे फिर आप 20% निकालोगे। 51,200 का 20% आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 10,240। 51,200 का 20%, ओके। एंड देयर आफ्टर आप उस वैल्यू को डिडक्ट कर दोगे 51,200 में से, तो वैल्यू आ जाएगी 40,960। And last year, in the last year you will find that in the last year, मैं लास्ट ईयर क्यों बोल रहा हूं वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि when we charge the depreciation at the rate of 20% by the original cost method, you can find that लास्ट ईयर अब आपने 20,000 डेप्रिशिएशन लगाया, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 ऑन 31/2015 बुक वैल्यू आई। और यहाँ पे फिर डेप्रिशिएशन लगेगा 40,960 इंटू 20%, ओके, 8,192 and now your value is 40,960 minus this, that is 32,768. So we will find that after some year, when we charge the depreciation by original cost method, the value of the assets will reduce to 0. But when we charge the depreciation by written down value method, the value of the assets cannot be written down to 0. यही मैं समझाना चाह रहा था आपको, और ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये टेबल से आपके इतने डिफरेंसेस निकलेंगे, द डिफरेंसेस बिटवीन ओरिजिनल कॉस्ट एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, कि आप विश्वास नहीं करोगे। और उन सारे डिफरेंसेस को वन बाय वन यू विल राइट डाउन इन योर कॉपी एंड विद दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल को कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you can see that after the discussion the original cost method, the second method today we will discuss, that is written down value method. इस मेथड में आपने बेसिकली देखा क्या? इस मेथड में आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू written down value method द depreciation is charged every year on the written down value method, on the book value, written down value of the assets. तो पहला डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको कि ओरिजिनल कॉस्ट में आप डेप्रीशिएशन किस पे चार्ज करते हो? एज पर द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यू विल चार्ज द डेप्रीशिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। आप 20,000 एवरी ईयर आप 20,000 का डेप्रीशिएशन चार्ज करो, बिकॉज एज पर द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड डेप्रीशिएशन विल बी चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द रिटन डाउन वैल्यू मेथड, so the depreciation will be charged on the written down value of the assets. What is the written down value method? Written down value means the amount of original cost minus depreciation. तो 1 लाख रुपए फर्स्ट ईयर वैल्यू थी, उस पर 20% निकाला। सेकेंड ईयर की वैल्यू कितनी थी? 80,000, उसका 20% निकाला। थर्ड ईयर की रिटन डाउन वैल्यू कितनी थी? 64,000, उस पर 20% निकाला। फोर्थ ईयर में रिटन डाउन वैल्यू कितनी थी आपकी? 51,200, उस पर डेप्रीशिएशन निकाला। फिफ्थ ईयर में आपकी वैल्यू क्या थी? 40,960, उस पर डेप्रीशिएशन निकाला, उसका 20% निकाला। सो फर्स्ट डिफरेंस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं डिफरेंस नंबर 2। उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, बिकॉज मैं कुछ चीजें रिमूव करूंगा। ओके, थैंक यू। So now the second difference between the straight line method and the original cost method. Second difference क्या है? You can find the second difference very easily with the help of this table. You can find that
each and every year the amount of depreciation on the original cost method is same. The amount of depreciation as per the original cost method is same and constant. देख लो same है. But according to the written down value method, the amount of depreciation is not same. Same नहीं है, different है. As well as the amount of depreciation as per written down value method, the amount of depreciation will decline every year. यहाँ इक्वल भी है, कांस्टेंट भी है. तो अगर आप इस ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की बात करें या रिटन डाउन वैल्यू की मेथड की बात करें, तो इन दोनों में डेप्रीशिएशन की अमाउंट जो है वो इक्वल होती है, यहाँ अनइक्वल होती है अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन. पहला डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस और तीसरा डिफरेंस ऑटोमेटिक क्या निकल के आ रहा है कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में जो अमाउंट है वो कांस्टेंट होती है, यानी एक जैसी रहती है. बट रिटन डाउन वैल्यू मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अनइक्वल है. अनइक्वल का मतलब तो ये भी हो सकता है 20 हो जाए, यहाँ 24 हो जाए, यहाँ 26 हो जाए, फिर यहाँ 40 हो जाए. तो अप्स एंड डाउन हो नहीं, यहाँ डिक्लाइन का फॉर्म देखने को मिलता है. तो यू कैन फाइंड दैट एज पर द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड you can see that the amount of depreciation is equal and as well as constant. But when we are talking about the written down value method, the amount of depreciation is unequal as well as it will decline year by year. Okay, the next point and the last difference between and last important difference between the original cost method and written down value method, you can see in this table, that is this. After a certain period, when we charge the depreciation on a particular asset by original cost method, the value of the assets will reduce to the zero. But when we charge the depreciation by written down value method on a particular assets, its original cost value cannot be written off to zero. So you will find the 4 differences between original cost method and written down value method with example, with proof, for your clarity, for your presentation examination. So at last, without taking any time, मैं summarize कर देता हूँ. The first difference between original cost and written down value method. In the original cost method, depreciation will be charged on original cost. In the written down value method, the depreciation will be charged on written down value or the book value of the assets. The difference number 2. The difference number 2 is the amount of depreciation is equal from year to year under original cost method, but in written down value method, the amount of depreciation is not equal. Difference number 3. In the original cost method, the amount of depreciation is constant, but under the written down value method, the amount of depreciation will be declined. 20, 16, 12,800, 10, 240 and 8192. And last but not the least, the fourth difference between the original cost and written down value method is that after some year, when we charge the depreciation by original cost method, the amount of original cost the assets will reduce to zero, but when we charge the depreciation by written down value method, the original cost of the assets will not written off to zero. So I hope today we cleared the important feature of written down value method, as well as the important feature of the original cost of method, as well as we can easily differentiate between the original cost and written down value. यानी इस एग्जाम्पल से आपकी कितनी चीज़ें क्लियर हो गई. पहला, you will understand the features of the original cost method. Secondly, you will easily understand the feature of the written down value method. Number 3, you will easily find out the difference
between the original cost method and written down value method. And number 4, you will easily prepare for your examination when any question comes from this chapter, because इस chapter में 2 ही method आपको पढ़ने हैं, original cost method and written down value method. Okay, so now at the end of this video हम कुछ और points पे भी discuss कर लेते हैं. Now we will move to the next topic. So now we will talk about the rate of depreciation can be determined on the basis of cost, scrap value and useful life of the assets. So you know very well, basically आपने ये find out किया है कि how will you find the rate of depreciation. So you will find the you will find the rate of depreciation by this formula. और previous video में हमने इस पर discussion भी किया है कि कैसे आप find out कर सकते हैं. So you will find the rate of depreciation, that is the annual depreciation divided by original cost into 100. Okay, so this is the first formula. When you calculate the rate of depreciation, जब annual depreciation given हो तो आप rate of depreciation easily calculate कर सकते हो. Suppose किसी question में annual depreciation is not given, so इस situation में how will you calculate the rate of depreciation? आप कैसे calculate कर सकते हो, उसके लिए एक और formula आपके screen पे show हो रहा है. The second formula for calculating the rate of depreciation, that is 1 minus n under root s upon c into 100. Please note down this formula because for the MCQ question, जब आपके एग्जामिनेशन में MCQ क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली इस फॉर्मूले की एप्लीकेशंस बढ़ जाती हैं. सो हाउ विल यू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन विद द हेल्प ऑफ यस यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ द एसेट. सपोज किसी क्वेश्चन में 3 चीजें दी हैं, द बेसिक फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन, दैट इज द useful life, scrap value and cost. So how will you determine the rate of depreciation? This formula useful for you. In this, n means useful life. n जो होता है जनरली पीरियड के लिए भी होता है, you know very well, यानी life, n for useful life. Whereas the s for scrap value and c for cost of assets. Okay, so you will find the formula of rate of depreciation. You will apply any of the formula. You can apply any of the formula given on the screen, but it's totally depend on the given information in the question. जो information question में given है उसके according ही हम rate of depreciation calculate कर सकते हैं. Okay, so any doubt? Into 100, it is a into 100. And so today we cleared the very important topic in one video. और जनरली इस पूरे टॉपिक को पढ़ाने में 2-3 क्लासेस निकल जाती हैं, बट विद द हेल्प ऑफ समराइजेशन, विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड गिवन एग्जांपल, यू विल easily find out the few things very easily which are very important in this chapter. So in this video today we cleared the first topic, that is what is written down value method. It is the second method of depreciation. As you know, the second method of depreciation says that कि जो depreciation will be charged on the book value of the assets. The rate of depreciation, the amount of depreciation is not constant, is unequal, as well as the decline in nature. And number 3rd, when we charge the depreciation by written down value method, the amount cost of the asset will not reduce to the 0. As well as in this video we also discuss the difference between the original cost method and written down value method. We find out the mainly 4 difference between the original cost method and written down value method. And at the last, in today's video, we will find how will you calculate the rate of depreciation with the help of cost, scrap value and useful life. You know, in the last video we already discussed this formula, how will you calculate the rate of depreciation with the help of annual depreciation.
when in any question there is no information about the rate annual depreciation, but question is information given about the useful life, scrap value and cost of the assets. So how will you calculate the rate of depreciation? The formula is 1 minus n under root s upon c into 100. You will put this formula and find out the rate of depreciation. So in the next video we will come to the some of the important numerical problems related to the written down value method. So I hope today we cleared all the topic very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.